गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी इक्यू करंट अफेयर वीकली सेशन जोटा रही हमरो राइट। तो वीकली करंट अफेयर को आप मन को स्वागत। तो वीकली करंट अफेयर जोटा में देखिबा दैट ये साधारणतः वीकली मतलब बेसिकली टॉप करंट अफेयर मु पिक करी छी व्हिच इज फ्रॉम द 15th ऑफ तमरो कमेंट मु समस्त देखी पारुछि फ्रॉम द 15th ऑफ अगस्त नै कि 30th ऑफ अगस्त भीतर जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर गुडा थिला ताकू मु पिक करी छी राइट। सो गुड इवनिंग शत्रु अफरीन सस्मिता चल फिर द फर्स्ट इंपोर्टेंट जदी देखियो मिशन सुदर्शन चक्र दैट मींस मिशन सुदर्शन चक्र इज व्हाट। तो जदी देखियो आकू तुम माने कोन क्वेश्चन देखो ये तुमको इधर ये ध्यान से देखियो इधर ये तुमको प्रीलिम्स रे पचारि पारे और तुमको मेंस रे पचारि पे और आई वुड से यूपीएससी किंबा ओसीएस मेंस रे भी पचारि पारे। तो बोथ पाई इंपोर्टेंट फास्ट कथा होची दिस इज इंपोर्टेंस फॉर द बोथ राइट। बोथ पाई ये तुमरो इंपोर्टेंट रहिबो। सुदर्शन चक्र दैट मीन सुदर्शन चक्र कहले जो सुदर्शन चक्र कथा समस्त जानि छिवो कि माइथोलॉजिकली दैट इज वेरी इंपोर्टेंट राइट। तो से जो सुदर्शन चक्र रे हमर कोन कोन आसुची राइट। तो ताकू मु जो मोर नोट मध्य मु तमन को कहिबी कि हाउ आई हैव डन माय नोट ता पई मोर नोट केमती मु बनै छी राइट। तो मु केमती मोर नोट बनै छी तो दिस इज माय नोट एमती मु मध्य नोट सुदर्शन चक्र रो आई एम हैविंग ए नोट लाइक दिस। तो एटा तो मोर पर्सनल नोट मु जोटा तमन को देखौ छी तो राइट। तो एथरे हमें को जिंस को कवर करथाउ। तो सुदर्शन चक्र मु तुमको कहली हाँ आयरन डोम ऑफ इजराइल ना सेटा हम कह कह इट्स अ शील्ड एंड ए सोर्ड। तो जदि हमें कहबा सुदर्शन चक्र सिस्टम बोथ ए शील्ड एंड सोर्ड तो आपको हमें कौन कहबा इट्स बोथ ये होची गोटे तमरो शील्ड इट्स अ शील्ड एंड सोर्ड दीटा तुम कहबो इट्स अ व्हाट सोर्ड आल्सो सोर्ड बोथ आसे जीवो याको किए कहूची सीडीएस कहउचंती। इट्स अ मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम इट्स अ व्हाट मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम। नाउ साधारणतः शायद समस्ते जानी सारथो हमर जो एयर डिफेंस सिस्टम रही द एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया। तो ये जो सुदर्शन इज व्हाट एयर डिफेंस सिस्टम जोटा कि हम इंडिजिनियसली डेवलप करूचे। तो साधारणतः हमर जेमती तमरो एडवांस एटमॉस्फेरिक डिफेंस सिस्टम छी एंड पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम रही वी आर हैविंग टू लाइक दिस गोटे होची एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम आ गोटे होची पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। सो दिस इज द टू सिस्टम वी आर हैविंग एयर डिफेंस सिस्टम राइट। लेट्स से then S400 also there right S400 मध्य रही। तो ये आम आकाश कथा नहीं जीवो लेट से तुम जब आकाश मिसाइल कथा नहीं जीवो तो आमर साधारणतः आम सुदर्शन चक्र कहले इट्स ए ऑल अराउंड आम कहबा। तो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम एंड पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम अर्थात जेतेबेले कोनोसी मिसाइल लेट से ये होची तमरो मदरलैंड दिस इज द व्हाट motherland of India and this would be the atmosphere. If any missile enters into the atmosphere of India that would be killed through the advanced air defense system. कौन सी मिसाइल यदि इंडिया रो एटमॉस्फेयर बाहर अछि ताले हम ताको पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम रे डिस्ट्रॉय करि परिबा। सो दिस इज हाउ एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम एंड द पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम वर्क्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आमे जो हमर रखि छी एडवांस रे काहा को रखि छी S400। सो S400 इज योर एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। ये शायद समस्त को बुझा पड़थो बैकग्राउंड जदि हम कहबा 2025 अगस्त जोटा 15 अगस्त कहथिले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहथिले कि इंडिया विल हैव इंडिजिनियस मल्टी डोमेन्स डिफेंस शील्ड करा छिबो सेतरे तुम क्यूसैम रहिबो दैट इज QRSAM जाको हमें QRSAM भी तुम कहि परबो दैट इज क्विक रेस्पॉन्स पई हमें मध्य रखिचे एंड सेतरे हमें एथरे तीनटा लेयर रहिबो जदि मु तुमको लेखि कि देखैबी दैट विल हैव 3 लेयर्स राइट। वन रहिबो तुमरो वेरी शॉर्ट रेंज एथे तीनटा जिंस थाए गोटे रहिबो तुमरो QRSAM अर्थात क्विक रेस्पॉन्स सिस्टम आ गोटे रहिबो हमर DE अर्थात जोटा कि हम कहबा हाई एनर्जी लेजर सिस्टम जो थरे हम कहि परिबा। देन आ गोटे रहिबो तुमरो वेरी शॉर्ट जोटा रेंज आमे कहबा सेथरे हमें मध्य दैट इज VSHORADS। तो दिस इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट रेंज पे हमें मध्य रखीचे। तो जदि सपोज किसी UAV आसिला हमर ता पई भी हमें रखीचे। तो देन अपार्ट फ्रॉम दैट जोटा हमर मैन पैड मध्य रहिची राइट मैन पैड जोटा हमें कहले एबे ये सब हमें डिस्कस करि परबे एथरे तमरो कंटीन्यूअसली बहुत सारा जिंस रहिची जाको हमें कहूचे आयरन डोम्स मध्य कहि परिबा
एथरे कोन कोन रहिबो देखा इंटीग्रेटेड एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम रहिबो बैलिस्टिक मध्य रहिबो ड्रोन्स रहिबो हाइपरसोनिक रहिबो एयर सरफेस टू सरफेस रहिबो सरफेस टू साधारण सरफेस टू सरफेस दरकार नहीं सरफेस टू एयर ही परिबो वाटर टू एयर ही परिबो सो दैट वुड बी देयर AI enabled command and controls मध्य रहिबो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन मध्य हमरो रहउची देन हम देखिबा साइबर एंड स्पेस सिक्योरिटी मध्य इथरे इंक्लूड हेकी रहिछि राइट डिफेंस अगेंस्ट द साइबर जोटा कि इंट्रूजन्स सैटेलाइट्स अटैक इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर ये सब को गोटे कॉम्प्रिहेंसिव दैट मींस जेथरो हम डिस्कस करूचे ये बुझा पड़ुछि ना बाकी मानको तो जेथरो हम कहूचे एथरे तुम डीआरडीओ इसरो भारत डायनामिक्स एलटीडी ये समस्त रही मिसिकी करुँच तो दैट इज द व्हाट जहाँ को कहे सुदर्शन चक्र कहीं ये बहुत इंपोर्टेंट एथरे तुमको पचार तो राइट जोटा मुझे तुमको कहली यहाँ रहा कौन आमर आपको कौन कहे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम आपको आम कौन कहे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम बा सुदर्शन चक्र आम कहे दैट इज फॉर द एयर डिफेंस ऑफ इंडिया दैट इज फॉर द व्हाट एयर डिफेंस ऑफ इंडिया करेक्ट बाकी बाराग हो पार आकाश हो पार सब आमर ये आसीज देन की फीचर्स देखिए 360 डिग्री मल्टी लेयर सील्ड रहिबो combines of satellite radar network drones and interceptors of missiles everything is there इस तरह सब रही इंटरऑपरेबिलिटी मध्य रही जमती तुम बाराक होगला ट्रिम्फ होगला आकाश होगला पृथ्वी होगला S400 होगला डुअल यूज आम कही परिबा ये सब भी यूज करि परबा स्केलेबल अछि एवरीथिंग इज स्केलेबल राइट आको आम कहि परिबा देन स्ट्रेटेजिक जदि आम जीवा कि स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस कौन रहिबो that is depends on the that means हमें कहे इंडिया need to reduce the dependency on the foreign power हम जो टारगेट रही ना by 2047 सेल्फ रिलायंट सो सेल्फ रिलायंट does not means only in food डिफेंस सब थे हमको सेल्फ रिलायंट हबार अछि that is why we need to be self reliant तो जो डिफेंस ऊपर मध्य हमें ताको सेल्फ रिलायंट ही पे पर मुहूर्त में ताको एक्सपोर्ट मध्य करि परिबा बिकॉज़ यूएसए रशिया देखो फ्रांस यूएसए फ्रांस रशिया दे आर अर्निंग मैक्सिमम थ्रू द डिफेंस एक्सपोर्ट तो आमे जदी लेट्स से जमते में फूड को एक्सपोर्ट कर जो वंस अपॉन अ टाइम्स देयर वाज अ टाइम्स इन 1950s एंड 60s वी वर बट हैविंग मतलब आम पाखरे ए सिस्टम थिला में खाइ को पाउ नथले ना आम पाखरे एतिकी फूड हेला में बाहर को मध्य एक्सपोर्ट करछ सेमती गोटे दिन आसीबो कि डिफेंस रे में सैचुरेटेड हेजबो देन वी विल स्टार्ट टू एक्सपोर्टिंग द defense equipment to the rest of the world that time that will be earning for us good evening शिखा राइट तापे सेतेबेले से हमको कोन करबो अर्निंग दबो राइट तो ये हमको डिफेंस चैलेंजेस रखाई छी जदि हम कहबा मैच्योरिटी ये सब हाइपरसोनिक हाई कॉस्ट रहबो साइबर सिक्योरिटी रिस्क आल्सो देयर जियोपॉलिटिकल रिएक्शंस हमको देखिबा could trigger the regional arms race like China Pakistan likely to counter ये माने आर्म रेस मध्य कहि पारे एंड द नेक्स्ट ये देखि देला हमें तो ये आम कह चाइना जमती होगा पाकिस्तान होगा से मैंने माइट बी इन फियर सेन्स गोटे सेन्स ऑफ फियर डेवलप हम तो गोटे आर्म रेस चली पारे मतलब एवं एयर डिफेंस सिस्टम पे गोटे रेस चली इन द वर्ल्ड लाइक द आरएंडम जमती इज्राइल कर S400 जमती कर एंड यूएसए कौन अच्छी किए कह यूएसए अच्छी है कि नहीं चले द नेक्स्ट टॉपिक को आसवा 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025 दिस इज वेरी इंपोर्टेंट कौन पे इंपोर्टेंट ए बिल रो बैकग्राउंड देखा कि लोकसभा इंट्रोड्यूस ऑन द 20th of August 2025 aims to strengthen the political accountability and the ethics in governance so what is this ना एथरे कहा जाउची कि कोनोसी लोक को केमिति आमे रिमूव करा छिबो चाहे से सीएम है जो प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट इज नॉट इंक्लूडेड पीएम कथा नहीं जो कौन से मिनिस्टर कथा नहीं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कथा नहीं जो क्रिमिनल चार्जेस जदि आसुची कौन सी लोक को ताको हमें सेठी रिमूव करबा हां थर्ड कौन अछि शत्रु लिखि छी थर्ड एस राइट एस ए वर्ड थर्ड ताले इथरे देखो ये जो बिलटा तुम लोकसभा 20th of August इंट्रोड्यूस होई छी कौन पे स्ट्रेंथनिंग ए लाइन को पूरा कॉपी पेस्ट करबा और आंसर लिखिबो जेमिति लिखाई छी एम्स टू स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी इथिकल गवर्नेंस कॉपी एंड पेस्ट करिया पड़िबो कम्स एडमिट अ पब्लिक डिबेट क्रिमिनलाइजेशंस ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया कौन पे क्रिमिनलाइजेशंस ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया की प्रोविजंस देखा की प्रोविजंस कौन ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मिनिस्टर्स जो मिनिस्टर्स बने अछंती जेमती तुम्हारा पीएम सीएम यूनियन मिनिस्टर स्टेट मिनिस्टर कौन सी लोक जदि 30 दिन जेल रे रहिले सीरियस क्रिमिनल चार्जेस रे डिटेन होंती एठी कौन लिखा है डिटेन होंती with serious criminal charges
30 कंजिक्यूटिव डेज में ताले से तांकर जदि से एमपी एमएलए मिनिस्टर जहाँ हितो तांको पोस्ट गला डिस्क्वालिफाइड कोन हिजबो डिस्क्वालिफाइड सो दिस इज इंपोर्टेंट ताले याको आमी कोन करबा दिस अप्लाइज टू द ऑफेंस ऑफ पनिशेबल्स बाय 7 इयर्स और जदि अप्लाइज टू ऑफेंस पनिशेबल्स बाय 7 इयर्स और मोर करप्शन टेररिज्म रिलेटेड जदि कौन से केसेस रसले ताले भी से डिस्क्वालिफाइड हिजबो सो बेसिकली जदि हम कहबा द 130th constitutional amendment for the disqualification of the members and the ministers including that is union ministers state ministers and the CMs PM मध्य एतरे आउ कि आसुंदी PM मध्य तो तांकू रिमूव करा जाय परिबो they cease to hold the office immediately right ठीक अछि तो से माने कोन can be reinstated only if acquitted by cleared by the court से माने पुणी निद पोस्ट सेतबे आसी परिबे जदि कोर्ट कहबो ना सब से जो अरेस्ट हेछि सेटा इलीगल बा तांको विरुद्ध जो केसेस आसला सेटा फैब्रिकेटेड हेछि बा दैट इज नॉट हैविंग एनी एनफ एविडेंसेस नहीं बा ताको प्रूफ करिबार इन दैट केस हमें ताको कहि परिबा सोनीता आल्सो जॉइनिंग मी राइट तो ये 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भल से पढ़ी दियो दैट विल हेल्प यू रैशनल्स की नहीं में देखिबा स्टिल्स वी आर इन 130th अमेंडमेंट देखो जो थे ये जो कह दे कि जदि कौन सी लोक कौन कराउची बा एनी पर्सन हु इज डिटेन फॉर केते 30 डेज 30 कंजिक्यूटिव डेज एटी कौन लिखि 30 कंजिक्यूटिव डेज सीरियस क्रिमिनल चार्जेस ताहले वेदर जदि आमे ताकू देखिबा तर चैलेंजेस को आमे आसीबा क्रिटिकली देखिबा द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस ये गुटे रहउची कि क्रिटिक आर्ग्यूज करंती कि डिस्क्वालिफिकेशन मियर डिटेंशन हमें जदि कहूचे खाली जन को जदि डिटेंशन करा जो जानी सुनी कि ताहले तो से डिस्क्वालिफाई हिजो कोन से लोक जदि तो सेटा माने कहते ने कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोन जदि हमें कहबा somebody is not guilty of unless and until is proven not guilty unless proven किंतु एठी कहूची कोन कि क्रिटिक्स माने कहया कथा ताले कोन से लोक जदि 30 डेज डिटेन हेगले ताले से डिस्क्वालिफाइड हिजो तनु यार गोटे रिप्रिकॉशन देखा को मिलुची that will violate article 21's right to life and liberty proper due process ये रहला वायलेट करो तनु एमाने कहया कथा क्रिटिक्स कहया कथा ताले कोन से गोटे जदि मिनिस्टर बा एमएलए अछि भाबो ताको जदि अरेस्ट हे गेला 30 दिन रही गेले ताले ताले डिस्क्वालिफाई हे जबो ना जुडिशियल बैकलॉग एते सारा केसेस अछि एमपी एमएलए रो बा केसेस जदि न सुनानी हैला जदि जुडिशियल कस्टडी दे तांकर 20 दिन 25 दिन 30 दिन पळेला डिटेंशन ताले कोन हबो देन व्हाट विल हैपेंस तो से ऐसे कहउचंती कि जदि जुडिशियल जो बैकलॉग हमर चलीची एते सारा जुडिशियल बैकलॉग चलीची ताले दैट विल हैव आल्सो प्रॉब्लम्स तादर मते प्रॉब्लम्स क्रिएट करिवो राइट यू आर गेटिंग मी देन सिग्निफिकेंस हम कहबा इफ पास इट वुड बी अ लैंडमार्क रिफॉर्म्स अगेंस्ट द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स काने बहुत सारा तमे देखिबो एंड डेटा गोटे थिला शायद मु शेयर करिवि जस्ट अ मिनिट हाँ जो डेटा गोटे मुझे शेयर कर तुमको जो 30 दैट इज बट आम जो क्रिमिनल केसेस जो क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द एमपी एंड एमएलए कथा मुझे almost 31% of MLAs in India is having serious criminal charges and 29% MPs also having the serious criminal charges. लोक सभा जदि आम कहबा सिंस 2019 रु 2019 रु 2024 भितरे जो criminalizations of number of politician in the Lok Sabha is increased from 14% to 29%. ये जो आम देखा गोटे केमती केसेस रो डेटा मु तुमको कहीदेली जो डेटा राइट ये डेटा मन रखी पार तुमको कहली कि 31% MLA एंड 29% MP तो दे आर हैविंग as of now having serious cases against them. That means 29% MPs and 31% MLAs plus MLAs भितर तेलंगाना और बिहार जो MLA अच्छा भितर सब अधिक सीरीयस केसेस रही एंड MP जदि देखा सब अधिक क्रिमिनल चार्जेस इन नंबर बीजेपी बट परसेंटेज रे शायद बीएसपी ना कार बासपा ना सापा कार अच्छी मोर मन पड़ूनी तो एमती डिफरेन्स रही तो ये तुम देखिपर दिस इज हाउ आम डिस्कस कले तो तुम डेटा मन रख कि 31% ऑफ MLA इन इंडिया इज हैविंग क्रिमिनल चार्जेस 29% ऑफ MPs इन इंडिया इज हैविंग द क्रिमिनल चार्जेस तेणु ताकू आम सुधारी परिबा सो दैट एटलिस्ट
जो मैंने मनी पावर मसल पावर अच्छी से पॉलिटिक्स को न आसतु वी विल हैव द अकाउंटेबिलिटी लेट द क्लियर पॉलिटिक्स को क्लीन करिवार अछि क्लियर करिवार अछि अकाउंटेबिलिटी को सेट करिवार अछि एंड सुप्रीम कोर्ट रो डायरेक्टिव रही पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशंस वर्सेस यूनियंस ऑफ इंडिया 2014 रो जो केस आस्तला से अनुसार हम कहबा प्लस लॉ कमिशन रिपोर्ट मध्य 44th रिपोर्ट 2014 रे मध्य कहे कि आम देखा चलो फिर देन ट्रम्प तारीफ हाँ तो ये को आम देखा नेक्स्ट वी विल कम्स टू 50% तारीफ्स ऑफ ट्रम्प तारीफ जाको कहबा कि व्हाई दिस तारीफ ना जदि तुम मन को पचार जो कि व्हाई 50% तारीफ्स ऑन इंडिया इंडिया ऊपर कहीं 50% करा गला व्हाई 50% तारीफ्स ऑन ब्राजील व्हाई सो मच ऑफ तारीफ्स ऑन कनाडा कि जदि तुम देखिबो यूएसए कहा ऊपर अधिक लगैछि दैट इज इंडिया ऊपर अधिक तारीफ लगैछि देन तमरा ब्राजील ए दी जण होचंती सबटू टॉप 50% देन जदि तुम देखो मेक्सिको देन जदि आम देखा कनाडा चाइना so these are the countries is suffering high tariff rate these are the countries is suffering high tariff rate now why even किछि products इंडिया रो अछि जोटी 60% तारीफ मध्य रही कारण ये 50% एबे इंक्रीज हैला सपोज हमें मराइन प्रोडक्ट कथा नै जबा आगरु 10% थिला ये 50% तो मराइन प्रोडक्ट ऊपर वर्तमान 60% तारीफ लागिला अर्थात जोटा तमे 100 टंका रे पाउथलो वर्तमान 160 रुपीस देखि अमेरिका रे कंज्यूमर किनिया पड़िबो डायरेक्ट भाव 60 रुपीस इंक्रीज हो सो दिस इज हाउ द इंक्रीमेंट ओके तेणु करके आम कहवा नाउ व्हाई जदि तुम को पचार जीवो कौन पई बिकॉज ऑफ ट्रेड इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ व्हाट ट्रेड इम्बैलेंस तो जदि आम देखिबा बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ यूएसए ध्यान से मन रखो इंडिया जदि आम कहबा इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ यूएसए is the largest trade partner of USA. So India is what? Largest trade partner of USA. That would be there. Second is that India enjoys surplus trade. India कौन करे? Surplus trade enjoy करती. And that is the main point. As the India enjoys लगभग $40 billion, लगभग 40 or $41 billion, India enjoys the trade surplus with USA. किंतु चाइना से तो उल्टा लगभग we are having 100 billions of that is trade deficit we are also having तेणु ट्रेड इम्बालांस जो को देखिए से चाहूँ ट्रेड को बैलेंस करिया पई so that is the main reason ताले आम कहबा that is now 29th आम कहबा 29th of August to start हे जे 27 रो it's a what 27th आम कहबा 25% and 50% extra आम कहले ते जोटा कि तमर आसिला डिप्लोमेटिक क्राइसिस वर्तमान हे जाईची ऑलमोस्ट आम कहबा रीजन कोन ट्रेड डेफिसिट imbalance growing trade imbalance with India market assess complain that about Indian restriction of the American agriculture and tech products से कहा कथा कि अमेरिका रे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को इंडिया था मार्केट accessibility दउनी intellectual property right and digital rules USA raised concerns about India's new data protection and digital that is competition law ताकू से माने चैलेंज करंती Geopolitical factors analysis suggest that linkage with the oil imports from the Russia, independence foreign policy stance ये गोटे importance तो ये जो ये पॉइंट है ताकू टिके बात होची ये पॉइंट बेसी बात होची तो यूएसए जदी हमें देखिबा एठो एनालिसिस करिबा कि यूएसए काहे की ट्रेड बा जो तारीफ टा इंपोज कला एंड टू माय माइंड व्हाटएवर इन द जति की तमने हमें माने एति की अवेयरनेस आनी सारी छे द रीजन फॉर द इंपोजिंग इज द दिस टू दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट एंड दिस वन This two is the major reason point. 1 and 4th. 1 and 4th को जदि तम मने देखिबो this 1 and 4th is the main reason. ए दीटा होची हम कहबा main reason for the tariff impose. जदि हम कहबा tariff impose. But आकु नै कि तोर मेंस रे क्वेश्चन तो आसीबो ही आसीबो ना यू हैव टू रेडी ये मेंस रे क्वेश्चन आसीबो मेंस इंटरव्यू एबे इंटरव्यू चलछे ना एबे इंटरव्यू चलिबो तमरो माने जो माने इंटरव्यू दवा पे जाउचंती तो सेतर तो क्वेश्चन आसीबो 100% एतर किछि डाउट ही नै 100% मु कहली कोन 100% मोर 0.1% डाउट भी नहीं ए क्वेश्चन इंटरव्यू जो माने दउचंती यूपीएससी जो माने भी देबे आउ जो माने ओपीएससी एबे से दउचंती एबे देबे सेमान को पई प्लस ए मेंस रे मध्ये आसीबो
ओपीएससी मेंस कथा नहीं जो यूपीएससी मेंस कथा नहीं जो बा रिलेटेड है कि और प्रीलिम्स कथा नहीं जो ये सबुथिरे वापस ये चलिबो ये तमरो इशू चलिबो रिडिफाइनिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया कोन रिडिफाइनिंग तेणु आम कहवा कि redefine the foreign policy of India. Now this is a challenging time आम कहवा this is a challenging times to redefine the foreign policy of India to कारण USA सहित challenge करिबा ना and to stand out against USA is very challenging. तेणु गोटे देखिबा how the government is pursuing its policy एठी जणा पड़िबो कि हमरो केमती फॉरेन पॉलिसी हमरो केते स्ट्रांग कोन राइट गवर्नमेंट करूची ताको हमको देखियो पड़िबो ओके then impacts on India. What would be impact? Economic impact जैसे कहबा India export textiles, engineering goods, pharma, IT ये समस्त ऊपर प्लस तमरो माराइन प्रोडक्ट्स खास करी स्ट्रीम्स कॉटन इंडस्ट्री कथा नहीं जो तिरुपुर जो गारमेंट फैक्ट्री से तो ऑलरेडी तार बहुत गुड़ा फैक्ट्री क्लोज कर सारानी यूनिट गुड़ा प्लस आम देखा जो सब आम तमिलनाडु देखा जाउची कि जोटी सब मतलब गारमेंट गुड़ा तैयारी होगी जाऊला एक्सपोर्ट होता सेठी मध्य रोक लगिलानी मतलब माइग्रेंट वर्कर्स जो मैंने ओडिशा रू जाऊले काम करते सूरत चेन्नई कथा नहीं जाओ दिल्ली कथा नहीं जाओ से वापस आसिले राइट से वापस आसिले डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड जोटा तुम कमेंट कर शत्रु के डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड नो डाउट वी विल फोकस ऑन दैट ऑन द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड के टू मिनिमाइज दिस इम्पैक्ट यदि मुझे कहबी ना कि व्हाट वुड बी द हाउ टू मिनिमाइज दिस तारीफ इम्पैक्ट ये जो तारीफ रही तुम हाउ टू मिनिमाइज दिस तारीफ इम्पैक्ट जदि तुमको कह हाउ टू मिनिमाइज how to minimize one is that you have to diversify the what export policy and increase the domestic consumption you have to increase the domestic consumption and to be honest this is blessing in disguise that at least semane ebe impose korchunte and this is the festive season enters India is now enters into the festive season and in the festive season what happens the domestic goods and services will have more demand as compared to the other season so might be हमें ए टाइम रे टिके इम्पैक्ट आम ऊपर कम पड़ी पारे बट इट वुड बी फेल्ट आफ्टर जनवरी पर माइट भी सेटा हमको बेसी हिट फील हो पारे ओके सो यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव ऑन दिस सो आम कह इंडिया एक्सपोर्ट टेक्सटाइल्स इंजीनियरिंग ये सब देखा स्ट्रेटेजिक्स स्ट्रेन इंडिया यूएसए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आम कह क्वाड डिफेंस इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन बहुत सारा एरियाज अच्छी कोऑपरेशन डिफरेंट एरियाज आर देयर यू कैन कनेक्ट हियर एंड देयर तमें कनेक्ट करि परिबो since as a presence of what tactic before the US elections and the India growing closeness with Japan, Russia and the global south. Then India's response raised the issue at WTO को कथा जीवो डिबेट चलियो एबे इंडिया सहित अनपढ़ हम आमर दिस आर नॉट द गुड थिंग्स राइट दिस आर नॉट द गुड थिंग्स एबे सबू जदि आम कह जीएसटी भी आम रिवाइज करवा जीएसटी भी रिवाइज करा सो दैट आम ताकू केमिति व्हाट इम्पैक्ट को रिड्यूस कर परिबा जोटा के सस्मिता लिखी बोधे कि जीएसटी रिवाइज हबार अच्छी बहुत बढ़िया हाँ यहाँ सुनीता भी कहूँ कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट दीप्ति कहूँ गुड इवनिंग एंड ओके डोंट वरी तो यहाँ आम देखा कौन कि देख मुझे तुमको फटाफट आंसर कहीदे हाउ टू राइट द आंसर जो तुमको कहुच्छे ना कि व्हाट वुड बी स्टेप्स कौन इंडिया कौन स्टेप्स नवा दरकार जो तारीफ लगी 50% तारीफ लगी तो इंडिया कौन कर तो जो तुम कर गोटे देखो आम एग्रीकल्चर तो फास्ट आम देखा डोमेस्टिक मार्केट को आम कौन देखा आमर डोमेस्टिक मार्केट वी हैव टू फोकस्ड ऑन द डोमेस्टिक मार्केट सेकेंड इज that means we are also having what RCEP that is also a choice third is that GST reform fourth is that diversification of export right diversification of export fifth is that आउ कौन करि परिबा हमें राइट ग्रुपिंग जमती तमरो लेट्स से हमें SEO कथा नहीं जो that means WTO opportunity also there we can have also BRICS जो रही तमरो ये BRICS जो रही ब्राजिल्स ये सब जो रही ब्रिक्स आम कह ब्रिक्स प्लस जो मार्केटा अच्छी
सेटा में ब्रिक्स प्लस मार्केट को यूज कर पारे यू कैन यूज दिस मार्केट यू कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म्स याकू आम कमी परिबा आरसीईपी रे वी कैन जॉइन आरसीईपी domestic consumption we have to enhance domestic conversion and this is you have to improve plus Brazil सहित आम cooperation with Russia cooperation with China cooperation with Brazil cooperation with Australia South Korea ये समान को सहित हमको कौन रीच आउट करबा ग्लोबल रीच आउट सो दैट वुड बी व्हाट हम कहबा ग्लोबल रीच आउट इंडिया केते कंट्री को ऑलमोस्ट करि सलानी मोर देन 40 प्लस नेशंस सो ग्लोबल रीच आउट इंडिया हैज increase the global reach out अर्थात different countries को हमरो जेते ambassadors मन को माने that means ministry बा जा भी हो engagement करूछंती कि how to find out the मतलब possible solution केमती ही परिबा export वगैरह तापरे हम देखि परिबा we can have focus on global south बहुत बढ़िया global south market अछि तापरे focus करि परिबा चलो फिर reason for the tariff hike ताको हमें देखि दैछे now we will comes to the impact economic impact रहबो strategic impact रहबो political impact रहबो impact will be different india रो response हमें देखि सरिछे now come to anti maoist initiatives चले so anti maoist जोटा हमें कहबा that is mars बचाओ ऑपरेशन जदि आम कह इट्स अबाउट एंटी माओइस्ट ऑपरेशन ए वर्ष यूपीएससी मेंस रे मध्ये पचारछि तुमको व्हाई ये पचारा जायछि का रीजन इज दैट तो जदि तुमको पचार तुम मते पचार काहे कि एटा पचारा गला तो रीजन जोटा मु कहली कि एंटी एटा एथि पे कराइला कि हमर टारगेट अछि कोन दैट इज द मार्च 26 जो 26 मार्च मतलब 2026 जोटा मु कहबी के 2026 रो जो मार्च सुधा माओइस्ट को हमें कोन एलिमिनेट करिबा टारगेट होछि एलिमिनेशन तेणु ना आम लास्ट क्लास रे कही कि आम जो बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट अच्छी दैट इज माओइस्ट फ्री होता ओडिशा गवर्नमेंट डिक्लेयर करछंती तेणु माओइस्ट माने नाउ दे आर इन पॉकेट्स जो हमारा रेड कॉरिडोर श्रिंक हो जाए जो तुमको ये सब वर्ड लिखा पड़ो एलिमिनेशन टारगेट होगा पॉकेट रे अच्छे बर्तमान रेड कॉरिडोर कथा नहीं जाओ देन आम कहवा व्हाट अर्बन माओइस्ट कथा नहीं जाओ अर्बन आजिकल अर्बन नक्सलिज्म आसूची ना एटा गला नक्सल साधारणतः सेठी रहती किंतु अर्बन नक्सल ये गोटे आसीगला तमें अर्बन नक्सल तो ये सब कीवर्ड को तमें फोकस करिया पड़िबो हाँ तो तिरुपति टू पशुपति ये सब जो रही तुम ताको मेंशन करि परिबो राइट तिरुपति टू पशुपति माने तिरुपति कोठी अछि आंध्र प्रदेश पशुपति रहिला तमर कोठी नेपाल रे ये जो आपको रेड कॉरिडोर बोली कहा जाए दिस इज कॉल्ड एज व्हाट रेड कॉरिडोर ना द रेड कॉरिडोर को हमें फास्ट फ्रैगमेंटेड कले देन एथरे ऑपरेशन देखो कंडक्टेड अगस्त छत्तीसगढ़ रे सेंट्रल रिजर्व पुलिस कथा नहीं छ सीआरपीएफ कथा नहीं छ टुक एडवांटेजेस दैट इज अबूज मास फॉरेस्ट हमें कहबा ए ट्रेडिशनल माओइस्ट स्ट्रांग होल्ड कवरिंग पार्ट ऑफ दैट इज नारायणपुर दंतेवाड़ा बीजापुर एंड गढ़चिरौली महाराष्ट्र जोटा कि आम कहबा दिस इज द पॉइंट जोटा आम कहबा छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश जो बॉर्डरटा ये जो ट्राई जंक्शनटा येटा होची मेन हब जो माओइस्ट मानकर तो सेटा को आम टार्गेट करिचे इथर तो माओइस्ट को ये जो मेन पॉकेट्स को आम टार्गेट करिचे दैट अबूज मार्स हैज लॉन्ग बीन कॉल्ड एज द लिबरेटेड जोन बोली से माने कहते आम कौन से गवर्नमेंट अंडर आसु नाही पैरेलल गवर्नमेंट गोटे चलाउथिले कोन कहउथिले माओइस्ट दे वर हैविंग ए पैरेलल गवर्नमेंट तो हेति पे एटा को टारगेट करागला डिफिकल्ट टेरेन्स रही मुकल लिमिटेड स्टेट प्रेजेंस एथरे स्टेट रो प्रेजेंस बहुत कम अछि बिकॉज ऑफ द माओइस्ट फियर कोठी तमर रहिबो दैट इज अबूज मार्च हैज लॉन्ग बीन कॉल्ड एज द लिबरेटेड जोन भी कहाचे ये कोठी अछि ये जो हमें डिस्कस कले दंतेवाड़ा बीजापुर गढ़चिरौली महाराष्ट्र नारायणपुर दिस आर हार्ट ऑफ माओइज्म व्हाट हार्ट ऑफ माओइज्म बा हार्ट ऑफ रेड कॉरिडोर हार्ट थिला एटा आ ऊपर अटैक कर जो के सीआरपीएफ अटैक करछंती राइट तो एटार की आउटकम कोन फियर्स एनकाउंटर तो बोथ जदि हम कहबा बिटवीन द सिक्योरिटी फोर्स एंड माओइस्ट मानकर कैडर में फियर्स एनकाउंटर देखा को मिली 300 प्लस आइटम्स को सीज करा जाय AK-47 INSA ग्रेनेड्स आईईडी लैंड माइन ये सब जबत करा जाय एक्सक्लूसिव्स एंड वायरलेस सेट्स माने मध्य कोन कराई जबत करा जाय considered one of the biggest recoveries in the recent anti-Maoist operation, significantly disrupt Maoist supply chain
and that is combat capabilities. तो ये जदि आम कहबा आ द्वारा कौन है कि जो गडचिरोली वगैरह अटैक है सो दैट तांकर मतलब बैकबोन इज नाउ ब्रोकन द बैकबोन ऑफ आम कहबा माओइस्ट इज ब्रोकन बिकॉज ऑफ दिस अटैक. ये जो अटैक है गडचिरोली बीजापुर ये जो दांतेवाड़ा so that has broken the backbones of the Maoism कहना एटा तांकर बैकबोन थिला. that is the reason एठी हम कहि परिबा. ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट रे देखिबा जति भी तो माओइस्ट रिमेन स्ट्रांग इन रेड कॉरिडोर टू छत्तीसगढ़ झारखंड ओडिशा बिहार पार्ट महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश. however violence जोटा declined 70% in the last decades according to the ministry of home affairs data जति हम कहिबा and 80% personnel जोटा कि में डिफेंस पर्सनल रो डेथ कम जिछि एंड सिविलियंस as well. Clear reminding pockets जोटा कि वर्तमान it is clear the current focus on the pockets. बाकी वो कॉरिडोर टा नहीं आगे पूरा कॉरिडोर टा थिला एबे पॉकेट्स रे आसी गलानी डेवलपमेंट सो दैट हम ये पॉकेट्स को खत्म कर देला परे देन वी विल इनिशिएट रोड टेलीकॉम स्कूल्स डेवलपमेंट को हमें फोकस करबा. ओनली अंटिल दिस द फियर इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द माइंड ऑफ द पीपल्स माओइज्म जो माओइस्ट माने अछंते तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हेई परिबो नाही. लेट देम फिनिश फास्ट देन वी विल स्टार्ट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज. ओके तो ये था. देन एसवा प्रेसिडेंट रूल्स एक्सटेंडेड इन मणिपुर 2025 ये भी गोटे इंपोर्टेंट न्यूज तुम रही से तुमको क्वेश्चंस प्रिलिम रे आसी पारे कि जो आम कहबा अगस्त 13 जोटा है 2025 रे वी हैव व्हाट द यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव कले एक्सपेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल्स इन मणिपुर फॉर द 6 मंथ. अगे मणिपुर रे 6 मंथ पे एटा को अप्रूव करा गला राइट. ता द्वारा कौन हबो तो imposed under the articles 356 of the Indian Constitution comes into wake of the president's ethics as a ethnic tension between the Kuki and Meitei. ये तो हम जानी ऑलरेडी बैकग्राउंड बहुत थोड़ा तुम मैंने पढ़िथबो हियर एंड देयर यूट्यूब से देखिथबो न्यूज़पेपर रे पढ़िथबो नो डाउट ना. एबे काहे की कथा रहला कि वाई एक्सटेंशन मेटियस एंड जो कुकीज रही छी. Now why this president's rule extended करा गला एथि पे extended करा गला because the अब peace establish ही परुनी still there is no peace जेतु peace नहीं तन करी extend तो करियो पड़िबो right and that is the main reason for the extension however main reason is that is the main reason for the extension of this right. ठीक अछि ये तो बुझा पड़ जिवो तमन कहबे तनो आर्टिकल्स जोटा हमर 325 रही छी एक मिनट डन. ओके तो ये जब हम देखा प्रेसिडेंट रूल्स जोटा एक्सटेंडेड करागला मणिपुर रे काहे की ऑब्वियसली हम देखले कुकी एंड मेइटी से जो कन्फ्रंटेशन थिला सो दैट इज द मेन रीजन तेणुक एक्सटेंड करागला. तो ये पीस हो पारुनी 2023 रु 25 हो गलानी लगभग आम कह 2 वर्ष है ये आर किसी सॉल्यूशन बाहरुनी मणिपुर सॉल्यूशन वायलेंस चलची एक्सटेंशन आम कह वाई एक्सटेंशन वाज नीडेड कहीं एक्सटेंशन वर्तमान करागला लॉ एंड ऑर्डर इज ब्रेक डाउन दैट इज द पॉइंट. कंटिन्यूअस क्लासेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ thousands fragile security situations still they are confronting among themselves between themselves we may say. Then governance paralysis हमें देखा गला state machinery unable to function effectively सेट में president rule आर मतलब हमें कहबा central force will be heavy ही जो पूरा active है जो. Then pending political consensus हमें कहबा political consensus अर्थात दीटा ग्रुप भितरे consensus develop ही परुनी ना. That is also problem. No stable arrangements yet to return to the popular governance. कौन से ही पारुनी. That is also issue. Center responsibility as per the Supreme Courts and जदि हम कहिबा जोड़ा Minister of Home Affairs situation still volatile अच्छी required that is requiring what direct union administration हमको बर्तमान एठी दरकार we can't return to the normal governance एबे हेई परिबो नाही. So because of the prevailing situation is that the prevailing situation is not
I would say what, ready to have the, anybody is not ready to have the or to run the normal governance. ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? So that is what we need to focus on that, and still we have to wait and to ask when the situation will improve and we will restrict ease, the restriction will be ease and the popular governance, or I would say government will be placed if they wish. So that is depends upon themselves. Then constitutional basis. In the constitutional basis everybody is I hope कि समझते शायद किसी ना किसी पढ़ी थी वो तुम मने article 356 is also there for the what, internal disturbances and the emergency. भूल रे कहि दो कि 352 356 भूल रे कहि दो नहीं, because this would be silly है ना. proclamation approved by parliament, ये देखियो valid for the 6 month and ताको extend करिवो 3 years जाय जाई परिवो with a period of approval दे 3 वर्ष जाय में ताको नहीं परिबा. जुडिशियल सेफगार्ड कोन, एसआर बोमाई केस जोटा आसला 1994 कहितले स्ट्रिक्ट लिमिटेशन ऑफ द मिसयूज ऑफ आर्टिकल 56. दिस इज वेरी इंपोर्टेंट. तो एसआर बोमाई केस को जदि हम कहिबा कि एसआर बोमाई केस यूनियन जोटा हमर इंडिया यूनियन जोटा कहितले जुडिशियल सेफगार्ड्स, तो एसआर बोमाई केस जोटा कि यूनियन ऑफ इंडिया लेड द स्ट्रिक्ट लिमिटेशन ऑफ द मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356. तो सेथरे कुआ जाइतला कि स्ट्रिक्ट सेथरे कुआ जाइतला स्ट्रिक्टली, राइट. एटा को तुम मध्य पढ़िया को पड़िबो. एटा कोन कहतला एसआर बोमाई केस रे फ्लोट टेस्ट कथा कहतला. कोन कहतला कि फ्लोट टेस्ट, ए फ्लोट टेस्ट एटी तो फ्लोट टेस्ट पई भी कंडीशन नाही, तो फ्लोट टेस्ट केमती हबो? देयर इज अ नो सिचुएशन फॉर द फ्लोट टेस्ट ना, सेवले सिचुएशन भी नाही. अपकमिंग एससीओ समिट, क्लियर दिस वन. मणिपुर इशू इज क्लियर टू ऑल, समस्त जना पड़िबो, बुझा पड़ुची एवरीवन. दीप्ति, सस्मिता, शत्रु, बाकी मान को बुझा पड़ुची, सोनिता, एवरीबॉडी. देखो करंट अफेयर डज नॉट मीन्स कि हमें ओनली स्टाफ वी विल गो थ्रू द सम मसाला वाला स्टाफ, राइट. मसाला वाला स्टाफ करंट अफेयर आसीबनी, ये न्यूज रे अछि, ए ही तुमको क्वेश्चंस देबो. दिस थिंग्स आर नीडेड फॉर द रियल एग्जाम. चले नेक्स्ट, अपकमिंग एससीओ समिट. ना देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अटेंड द एससीओ समिट्स कोठी चाइना रे. काहे कि व्हाई दिस इज इंपोर्टेंट? काहे कि with the 50% of imports of tariffs on India, and that is why PM is also there in the SCO summit. सेथि पे हम सेठी जाई कि बस SCO summit को जीवा, राइट. SCO summit को जॉइन करिवा, राइट. सुनीता also there, okay. तो एससीओ समिट एथि पे इंपोर्टेंस रही छी बिकॉज ऑफ जो 50% तारीफ हम ऊपर लागि छी जोटा यूएस हैज इम्पोज्ड हम कहबा, एंड दैट कम्स टू फोर्स केबे आसेला ए 50% केबे 27th ना, 27th ऑफ अगस्त. एंड दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्लेटफॉर्म. ये होची आम पाख पाया गोटे कोन, इट्स अ प्लेटफॉर्म, इट्स अ व्हाट, प्लेटफॉर्म फॉर अस दैट वी कैन एटलीस्ट एंगेज दोस मेंबर, एटलीस्ट एंगेज those member at part of the SCO to develop cooperation with China, to develop cooperation with Russia. Already we are having cordial relations. Also PMs मध्ये SCO summit join करिया पूर्वरु जापान मध्ये जाइछन्ती, and there he will also have the good meeting सेठी मध्ये हम देखिबो. So that is why to open another front, but new front, to open new front, simple I would say, to open new front. That is the reason to open a what, न्यू फ्रंट. कहना ये डेट मन रखो जोटा में कहूच सुजाता प्रधान, ये डेट इंपोर्टेंट, दैट 27th of August. कहना ये ओपीएससी ये भलिया क्वेश्चन पचारे प्रीलिम्स रे. हु नोस ओपीएससी डायरेक्ट हमथि प्रीलिम्स रे तुमको डेट ही पचार दो के को डेट रे करथिले, केते परसेंट करि छन्ते, एमथि फालतू क्वेश्चन भी आसी जाय ना केबे केबे. I do say these are the फालतू questions, does not have any, that does not carry any kind of weight is behind it. 27% hegela, this numeracy is not required for us. What is the logic behind that? That is the more important, rather going into the date and that data. Date and data is not important. We need to have that analytical ability ki why these things are happening, what are the scope for us. This is the things you have to analyze. Okay,
So you have to analyze those aspect, the scope, what are the scope lies in front of India, how India will manage, whether we will stop talking to USA, no, whether what are the China challenges. See, एबे आमे भाबुचे कि USA 50% तारीफ लगी समस्त कहबे कि yes, let's say to cooperate with China, let's say to cooperate with Pakistan. Did you know whether they are ready to cooperate you? And did you know the history of relation between India and China? India and China never be a, matlab China never be a friend of India, right? And that is why. And other fact is that China is having operations on us in front of for trade. So that is why whenever you are coming to the China, that means the China will be getting benefits rather than us. So better to have the negotiation with USA. My suggestion would be that if somebody will ask me, I will say I will ready to do the what negotiation with USA because I am having trade surplus with the USA. But China, I don't know how much government would be satisfied, how much government would be happier, how much government will get benefit by cooperating with the China. Let's see that what happens and what outcomes comes out. But as of now, the talks are in both fronts. That means that with China and USA and Russia, everywhere the talk is going on. Pratyusha Shuna, I am eagerly waiting for this session. Thank you. Okay, thank you. So that is why if somebody will ask you na कि हाँ चाइना सहित हमें cooperation बढ़ी दो ना China is never becomes a friend of you. Remind I that 1962, that was the Indo-China, the Indo-Sino War. What happens to there? Still the territorial integrity that is also compromised. Galwan Valley issue, you may talk it. Five Finger Point, you know everyone. The South China Sea issue, you know everyone. So that is why the $100 billion surplus with us, and that's the point that you can't, what I would say, tame the dragon. Tame the dragon. So better to have the negotiation with the USA and rest of the partners. Okay. So what we are getting, what we will get from the SCO summit? SCO summit is for what? That is for the SS. I would say what? One kind of security summit. It's a what kind of security summit that is going to happens there. हाँ तमें SCO को लिखी परिबो कि let's say SCO is a platforms that जो आमे operation सिंदूर करथले, you can express or you can put data facts there in SCO summit कि let's together we will fight the terrorism. That means the Pahalgam terrorism जोटा हेथला सेटा इठी represent करा जो कि this is the terrorism, right? जोटा आमे कह terrorism against tourism की यूज करा गला ए जो सेटा आमे इठी प्रेजेंट कर परबो बिकॉज़ चाइना भी इठी होची, पाकिस्तान भी भाई भाई दी भाई इठी अछंती, से दी भाई सामने रे डेटा फैक्ट्स आमे रखिबा, राइट? सो दैट इज व्हाई दिस इज द 25th ऑफ ये क्वेश्चन पचारि पारे तुमको प्रीलिम्स आगो को जो ओपीएससी प्रीलिम्स अछि तुमको पचारि पारे कि कोठी हेची केते तम सेशन थिला, फास्ट एसईओ समिट कोठी हेतला, केबी एसईओ हेतला, एज अ व्हाट काइंड ऑफ रैट कहा अंडर आसे, रैट मध्ये एसईओ अंडर आसे, रैट समस्त जानचे रीजनल व्हाट जोटा हमर एंटी टेररिज्म पाई रैट, दैट इज आल्सो कम्स अंडर द एसईओ Shanghai Cooperation जाको हमें कोच ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज वेरी इंपोर्टेंट. फ्रॉम द 31st to 1st of September 2025, that is Tianjin, China रे हवा. This is the 5th time China has hosted the summit. Participation की कर 20 world leaders including the head of the states from the SCO members, observer states and the dialogue partners, those who expected to attend the, what will we will get? आमको कौन मिलिबो? We will try to expose that good terrorism, bad terrorism, that idea that prevails in the rest of the minds of the world. Let it comes to the Pakistan, let it comes to the USA, that they are divided in forms of the good terrorism and the bad terrorism. Why this? Terrorism means terrorism. There is no segregation of good and bad. So that you can also say. Pahalgam issue ame ethi present kari pariba. Economic ideas we can also present, and apart from that, we must have the economic engagement with these top world leaders, those who would be in a single platform, right? So that is there, including head of the states. ये सब हमें देखेले. Prime Minister Narendra Modi ji will be there, and his fast visit to the China since 7 years. हमें देखो last 7 years पर हम कहीं परिवार. Russian President Vladimir Putin will be there. Iran President that is Masoud will be there. UN General Secretary Antonio Guterres will be also there.
बाकी आम देखा डिप्लोमेटिक ऑप्शंस कौन सब ऑप्टिक्स रही growing but solidarity with the major Europeans powers admit of mounting global tensions such as new US tariff and geopolitical shifts आम देखा agenda of discussion कौन रहिबो जोटा मु तुम को कहि security connectivity sustainability development trade terrorism and the economic resilience. These are the key words where the 20 leaders will talk. The 20 leaders will talk on this platform, on these themes. These are the themes, I would say. On these what themes? Right. Then geopolitical symbolism हम देखिबा Xi Jinping will host both Modi and Putin, showing what that is hard to miss diplomatic balance. तो एटा गोटे बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी Xi Jinping को भी मिली जिवो कि गोटे अपॉर्चुनिटी तांको मध्ये मिली गेला. The summit double as message of unity among global south and Europe, that is what Eurasian players मान को भीतर गोटे unity आसी जिवो एबे ग्लोबल साउथ मध्ये आसी जिवो तांको यूनिटी गोटे मिली जिवो हम कहि पे राइट ए सब बुझा पड़े थो. देन हम किछि ओडिसा पॉइंट को आसीबा हम किछि आसीबा ओडिसा गवर्नमेंट रो आसीबा विजन. तो ओडिसा गवर्नमेंट रो जो विजन रहिछि 2036 रहिछि समस्त जानछ एम्पावरिंग द ग्रोथ जो हमर रहिछि ग्रोथ इंजन ओडिसा को हम करबा दैट हमर जोटा ग्रोथ इंजन ऑफ ओडिसा जो एम्पावरिंग द ग्रोथ इंजन ऑफ ओडिसा कॉन्फ्रेंस इन भुवनेश्वर चीफ मिनिस्टर मोहन चरण माझी said a bold visions to transform the Odisha into a developed states by 2036. जो तुमको पचरे समिट कोठी हेतला भुवनेश्वर हेतला कोन रहिछि स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री माइनिंग chemicals IT tourism MSME and food processing and more including what that is the aquaculture including blue economy including semiconductors including IT companies everything. That means Odisha जे विकसित ओडिशा विकसित भारत जो गोल रही ना कि ओडिशा आउ गोटे सेंटेंस से कही सब मन रखो जो सेंटेंस गुड़ा लेखा हो ना दैट इज वेरी की यू हैव टू जमती मोहन चरण माझी जी कहते कि ओडिशा विल बी द ग्रोथ इंजिन फॉर इंडिया टू अचीव विकसित भारत 2047. व्हाट द सेंटेंस ओडिशा विल बी द ग्रोथ इंजिन फॉर इंडिया टू अचीव the Viksit Bharat target 2047, and that is why Odisha need to be developed before 40 at least. Before 40 at least. So that means if you say Viksit Bharat, then you need to have the Viksit Odisha first, so that it would be the driver. Odisha led, matlab I would say, led the Odisha to be drivers of the growth engine. Bas, that would be the sentence you have to write into the it must reflect in your answer लिखिला बेले तुम ताकू लिखि परिबो. Emphasis on the inclusive development, self reliance in health education, strengthen infrastructure, demography liabilities now जेमती हई जाय. We are having demographic dividend, but make sure that the demographic dividend may not turn into the demographic liability. Getting my point? ये क्वेश्चन आज नहले काली आसीबो 100% यूपीएससी पचरो एतरे कोन से प्रकार दुविधा नाही. एग्रीकल्चर बूस्ट नुआखाई आसिला तुम देखला 50 lakhs. That means हमें 1041 crores over 50 lakhs small than marginal farmers landless under the PM Kisan scheme पैसा पाइले. On the eve of Nuakhai, CM Majiji distributed kale 1041 crores to over 50 lakhs small and marginal farmers को देले. Complemented by the initiatives such as Samruddha Krushak Yojana, landless farmer support, entrepreneurship subsidies and educational scholarships for the farmer's child. एमान को पाई गोटे एग्रीकल्चर कने नुआखाई साधारणतः हार्वेस्ट फेस्टिवल ही था एंड दैट इज व्हाई ए बड़ा इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट नेले. इट्स अ गुड वन. सी फूड विथ द रेस्पॉन्स फ्रॉम द आमे देखिया जो 60% जो हमरो तमे जानिचो ओडिसा रे माछ चाष बहुत हुए कोन
श्रीम कल्टीवेशन एक कथा समस्ते जानिछ हाँ कि नहीं श्रीम कल्टीवेशन जो चुंगुड़ी चाष तमने समस्ते जानिछ चुंगुड़ी चाष ओडिशा is one of the leading producer of the shrimps in the country and the top Andhra Pradesh obviously the Andhra Pradesh remains in the top position. Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha they are the top 3 but the shrimp cultivation आमे जाको सी फूड बोली कहूचे यूएसए को आमे केते परसेंट एक्सपोर्ट करथौ श्रिम्प कल्चर 30% बाबू जेति कि चुंगुडी चाष होची 30% इज एक्सपोर्टेड टू द यूएस मार्केट नाउ बिकॉज ऑफ द 60% जो तमरा तारीफ लागिला आगु 10% काउंटर वेलिंग थिला तापर 50% लागला तो टोटल श्रिम्प ऊपर बा सी फूड ऊपर 60% तारीफ हे गेला तेणु करी बर्तमान जो मैंने चुंगुड़ी चाष करचंती बा लोन नहीं की रखिचंती तांको हालत कोन हबो जस्ट इमेजिन करो व्हाट वुड बी द चुंगुड़ी प्राइस पूरा कम जिवो द ओडिशा गवर्नमेंट हमको ऑन द सी फूड एक्सपोर्ट द ओडिशा गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू बट इंटरिम सपोर्ट फॉर इट्स सी फूड्स एंड टेक्सटाइल सेक्टर में कना जो माने सब लोन नहीं की रखिचंती बे सब चिंता रे पडिचंती माछ चाष करबा कि नहीं द सी फूड एक्सपोर्ट plunged significantly in the August हम कहबा affecting the farmers and processors टेक्सटाइल सेक्टर मध्य जाइछि तो या को ऊपर हमको देखिया पड़ो देन आमो शासन नेक्स्ट आसीबो तमर कोन आमो शासन रक्षाबंधन हाँ नेक्स्ट इज आमो शासन दिस इज वेरी इंपोर्टेंट सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस ako हमें कोन कहिबा दिस इज वेरी इंपोर्टेंट कोन सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस बा सिटीजन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस आमो शासन अर्थात कौनसी लोक डायरेक्टली सीएम पाखरे पहुंची पारे आमो शासन ए डिजिटल इनिशिएटिव पब्लिक आउटरीच प्लेटफॉर्म्स enabling feedback on the welfare and the administrative services via chatbot, WhatsApp and toll-free number, initially covering 30 services across the digital departments to build Odisha's expanding portfolio on the online services. That means critics allege it is a rebranded version of previous initiatives by the opposition बोली कहती let it be. डायरेक्ट आम कौन कह आम शासन जोटा करा जाउची एथरे कौन करा जबो ना डायरेक्ट तमे कंप्लेन सीएम पाखु पठै परिबो सो दैट गवर्नमेंट जानि परिबे तो एटा कौन सिटीजन एंगेजमेंट बा सिटीजन आउटरीच प्रोग्राम तमे जेतरो लिखिबो ना हेडलाइन ता जो आंसर लिखाबो आंसर लिखला बेले हेडलाइन रहबो सिटीजन एंगेजमेंट ता तळे पॉइंट रहबो राइट देन साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट Odisha police initiated कौन करछि देखा preparations of the detailed project report DPR for the establishment of Odisha Cyber Command Center OC3 this is very important तुमको पचारो O3C कौन O3C कौन तुमको पचारो कि साइबर जेतरो साइबर तो सबले आसुची तमरो साइबर चाहे प्रीलिम कथा नहीं जो मेंस एग्जाम कथा नहीं जाओ आसुची सेथरे तुम लिखो O3C कथा लिखि परबो this move respond to the that means हम कहबा dramatic spikes in साइबर क्राइम्स जोटा हमें कहबा केते परसेंट तक स्टैगरिंग 1917% तमरा इंक्रीज है साइबर क्राइम 2014 रु 24 भितर जेति देखिबो लगभग 2000% ग्रोथ हेची 10 वर्ष भितर 2000% ग्रोथ हेची साइबर क्राइम सेथि पई ताकू रोकिया पे हमें कोन करछे ओडिशा साइबर कमांड सेंटर O3C एडा को हमें कहूचे तो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बूट करा जायला जेमति भुवनेश्वर बाईपास एटा हमें डिस्कस करिथिले एटा तो हमें ऑलरेडी डिस्कस करिचे ये ऑलरेडी डिस्कस करथिले ना भुवनेश्वर बाईपास जोटा रहउची तमरो ना डिस्कस करिथिले ना एटा जोटा 6 लेन हबो हमर कोठी फ्रॉम तमरो एपटे जदी हमें कह कटक रो जो टांगी ठु नै की सेपटे रामेश्वरम खोरधार रामेश्वरम 110 किलोमीटर लगभग 110 किलोमीटर ये जो एरियाटा रहिबो ढेंकानाल हेकी तमरो जीव पूरा सेपटू खोर्धा भुवनेश्वर कटक को बाईपास करिवो काकू खोर्धा भुवनेश्वर कटक को बाईपास करिवो जो रामेश्वरम छक पर चिलिका पूर्व सेठु लागिवो दिस इज मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट बाईपास जोटा करा जाउची या को हमें एनुइटी हैम मॉडल रहिबो हाइब्रिड एनुइटी मॉडल गुड इवनिंग मिटू तो एटा को हम देखले 8307.74 करोड़ जोटा के एलोकेट करछन सेंट्रल गवर्नमेंट राइट एटा हमें देखिसे इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट जेतरो तमर इंफ्रास्ट्रक्चर आसुची सेतरो एटा को लिखिबो देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी पॉलिसी जदी हमें कहबा ओडिशा गवर्नमेंट कोन करछन देखो आईटी पॉलिसी 2025 ये मेंस रे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट आसीबो कोन कहली मु कैबिनेट ओडिशा कैबिनेट अप्रूव टू पॉलिसी ओडिशा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी एंड आईटी पॉलिसी 2025
आपको आज मन रख मेन्स रे जो मैंने प्रिलिम्स में अपेयर करिवो ना मेन्स बेलू ये कॉपी पेस्ट हो आंसर कहीं डायरेक्ट तुमको पचर डिस्कस द 2025 आईटी पॉलिसी ऑफ ओडिशा तार प्रोविजन लेख तो से तुमको डायरेक्ट लिखार अच्छी राइट यहाँ मन रखी था आज मुझे कहली क्या मुझे पूर्वर देख ओपीएससी मेन्स पूर्वर मुझे पढ़ी जो रोड इनिशिएटिव्स वगैरह से सब आसी हाईलाइट द इनक्लूड्स ऑफ सब्सटेंशियल कैपिटल सब्सिडीज ये जो 30% 40% आम देखी ये सब आमर जीव देन वुमेन सेफ्टी कंसर्न इन भुवनेश्वर अच्छा यहाँ देखा आम कह भुवनेश्वर तो जानच टॉप 3 रे अच्छी ये जो नारी रिपोर्ट किए वुमेन कमिशन किए वुमेन कमिशन नारी रिपोर्ट 2025 जिते वुमेन सेफ्टी आसूची रिपोर्ट को लिखिदेव जिते वुमेन सेफ्टी आसूची नारी रिपोर्ट 2025 रिपोर्ट फ्लैग्स concerning trend 6% of the women reported harassment including incidents in 2024's non-use safety apps like dial 1-to-1s or that is सहायता साधारणतः तुमको 1-to-1 यूज करियर अछि while 54% rated Bhubaneswar as the safe 54% safe कहउछंती सबटु सेफेस्ट सिटी होछि तमरो बॉम्बे वाइजाग भुवनेश्वर टॉप 3 इन इंडिया बॉम्बे Vizag, Bhubaneswar. This top 3 cities is the safest city in India. Right? ये टाइम को देखिए अपना. Then हमें देखिए ये तमरो डेब्यूट्स हमें कहवा आयसा ग्रामोत्सवम डेब्यूट जो हमें कहवा फर्स्ट टाइम ओडिशा होस्टेड द हमें कहवा कंट्रीज लार्जेस्ट रूरल स्पोर्ट्स फेस्टिवल एटा करछंती बस एतिक मन रखिबो. Then हमें फोकस करूचे कहा ऊपर इनक्लूसिव डेवलपमेंट एससी एसटी ऊपर मध्य फोकस करूचे ये पॉइंट्स गुड़ा टिके देखिदेव देन आमर मान इनिशिएटिव्स मध्य रही विमान जाको कोचे न्यूज कहीं लॉन्च ऑफ द विमान जोटा आम कह बिल्डिंग्स एंड मैनेजमेंट ऑफ एविएशन एसेट एंड नेटवर्क विमानस ताको मध्य देखिदेव कि एविएशन सेक्टर से गवर्नमेंट कौन कर मल्टी प्रोलम्स एविएशन डेवलपमेंट एजेंडा कर अगस्त 2025 रे हाइलाइट्स करछंती एथरे जो विमानस रे कौन रहइबो हमरो न्यू लैंड्स अलॉटमेंट हेगला जमती पॉलिसी फॉर द फ्लाइंग ट्रेनिंग हेगला यूएवीज कथा हेगला एरो स्पोर्ट्स हेगला अक्रॉस द एयर आम करने देन कन्वर्जेंस ऑफ 14 अनयूज्ड एयर स्ट्रिप जते हमर एयर स्ट्रिप सब रही ताको हम केमती यूज करबा ये सब तमर रही चलो तो ये थिला आज पूरा डिस्कशंस मु कहबी ठीक अच्छे बाकी ओ संपर्क मु ऑलरेडी तमन को कही ओडिशा स्टेट अपना मानस कथा फॉर द प्रवासी ओडिया कुटुंबम एटा तो आगुरु मध्य जानथो जदि ओ संपर्क कथा जानथो कि हाउ आमे कहबा कि जो प्रवासी ओडिया मानु को केमती कनेक्ट करिबा से माने केमती ओडिसा रा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रे हेल्प करिवे राइट बजट एलोकेशन 10 करोड़ कर जाइतला 2025 2026 रे सेटा मु खाली तुमको गोटे ग्लांस दा अपन एटा को ऐड करथि तो ये पूरा रहि जिवो तो पूरा सेशन आज हम देखिदेले तो आज रो सेशन ये थेला पूरा हम देखिदेले कि इंपोर्टेंट करेंट अफेयर को नहीं कि हम डिस्कस कर देले आज रो सेशन को यार पीडीएफ तुम मन को टेलीग्राम चैनल रे मिली जो मोर ओएस मेंटर राइट सो यू विल हैव ओएस मेंटर चैनल रे तुम मन को मिली जो ठीक अछि so with this I will end the session today आज रो सेशन को एंड करिबा कोहिमा थिला ना सॉरी अच्छा एटा बॉम्बे भी तो अच्छी टॉप रे बॉम्बे भी अच्छी कोहिमा भी अच्छी यस बॉम्बे भी अच्छी ना बॉम्बे ऑल्सो देयर बॉम्बे दैट मीन्स कोहिमा वाइजाग विशाखापट्टनम एंड जो वाइजाग जाओ एंड भुवनेश्वर ये सब जहाँ रही तुम ओके with this I will end the session today's sessions current affair weekly session important current affair thela and thank you everyone have a good and good night to all thank you all